Good morning, friends. Today we are going to see the important topic of our English writing skill. After ninth and 10th examination, this type of topic will going to come, and this topic name is dialogue writing. What is mean by dialogue writing? Dialogue writing म्हणजे काय होते मित्रांनो, संवाद लेखन. त्याला आपण मराठीमध्ये संवाद लेखन करतो. जो आपण संवाद करतो ना एकमेकांशी, त्याला आपण संवाद लेखन म्हणतो किंवा संभाषण. जो हम एक के साथ संभाषण करते हैं दोस्तों, उसे डायलॉग राइटिंग करता है. दिस क्वेश्चन कंटेन्स ऑफ 5 marks. This question contains of 5 marks and it is definitely going to come in the board exam. It is definitely going to come in the board exam for 5 marks. The question number is 5th B, where you have to do this dialogue writing, and what type of dialogue writing you have to do in the exam, that we are going to see today. So what is mean by dialogue writing? Dialogue writing means संवाद लेखन और संभाषण करना, जो हमें स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखना है. तो कैसे करते हैं इसकी फुल प्रोसेस आज हम देखेंगे. और क्वेश्चन में अगर इफ़ यू वांट टू get out of marks, means 5 out of 5 marks, what type of skill you require, that we are going to see in this type of dialogue writing. So let's get started. So what is mean by dialogue writing? This is the definition of dialogue writing, friends. What is mean by dialogue writing? Here we can see two guys are talking with each other. Dialogue means a conversation, म्हणजे संवाद और संभाषण between 2 or more people. Means the dialogue means the conversation, whatever the conversation you are making with 2 or more people. एक तर तुम्ही 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त लोकांशी जो केलेला संवाद, त्याला डायलॉग राइटिंग असे म्हणतात. ठीक है, तो त्याला डायलॉग म्हणतात. मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ किया हुआ जो संभाषण है, उसे हम डायलॉग कहते हैं. So do you understand what is mean by the dialogue? The dialogue means the conversation between 2 or more people. So please remember this thing, okay? So we will go further. So this type of question going to come in your exam, where you have to what type of marking scheme will be there and what type of question they will be are going to ask you. This is the question number B1. Okay, here first question they will be asked, prepare a dialogue from the jumbled sentence. Jumbled sentence mean, what is mean by jumbled sentence? The jumbled sentence means the sentence is not in their serial order, that they are in a jumbled order. जम्बल मतलब नीचे ऊपर दिए होंगे उस जो सेंटेन्स, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्रम से लगाना है. जेही वाक्य तुम्हाला वर खाली दिलेले असेल, चुकीच्या क्रमात दिले असेल, तुम्हाला ते बरोबर क्रमात लावायचं आहे मित्रांनो. त्याला म्हणते जंबल सेंटेन्स, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला 1 मार्क आहे. यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस जंबल सेंटेन्स. व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू ओनली find out which are going to come first in the dialogue, and you have to give the number like 1 2 3 4, and you have to write the serially you have to write the sentence, and you will easily get the 1 mark. मतलब जो भी सेंटेंस दिया है वो गलत क्रम में दिया है, उसको सही क्रम में लगाना है और वो वैसी के वैसी लिखना है, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा. ठीक है. द सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द डायलॉग. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको डायलॉग कंप्लीट करना है. मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे डायलॉग में, एक वर्बल दिया रहेगा और एक नॉन वर्बल क्वेश्चन दिया, WH क्वेश्चन दिया रहेगा. ठीक है, एक वर्बल क्वेश्चन दिया रहेगा एंड द सेकंड विल बी WH. इन द वर्बल क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली विथ यस और नो, एंड विथ WH क्वेश्चन यू हैव टू गिव द आंसर इन द फुल सेंटेंस, दैट इज ओनली फॉर 1 मार्क. लाइक हु इज़ योर फेवरेट टीचर, then you have to give and other question, do you like dancing, you have to only write yes or no. in this way the verbal and WH question is going to come. तो समझेगा वर्बल एंड, ये बहुत आसान है, इसमें भी आप इजीली 1 मार्क मतलब ले सकते हो दोस्तों, अगर आप इसको ठीक से समझ पाओ. इसके बाद है राइट अ डायलॉग ऑन अ गिवन थीम. One theme will be given to you, means one question will be given to you, and what you have to write, you have to expand that theme with minimum 3 exchanges of you and the person you are
मेकिंग कन्वर्सेशन, मतलब आप और आप जिसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसके साथ आप संभाषण कर रहे हैं, उसके जो मीनिंगफुल एक्सचेंजेस करना आहे. कितने? 3 आपके 3 उनके. 3 मिनिंगफुल एक्सचेंजेस करायचे आहे मित्रांनो. 3 तुमचे संभाषण राहील आणि 3 त्यांचे राहील. 3 तुमचे संवाद राहील, 3 त्यांचे. पण दॅट शुड बी मिनिंगफुल. that conversation should be meaningful, like they will be asked the conversation between you and your friend about the homework, about any topic. They were going to ask a question, and that question is for 3 marks. Means 3 conversation, 3 meaningful conversation of you and your friend or anyone of 3 marks. Okay. Prepare a dialogue from the jumble sentence. As I already told you, what is mean by jumble sentence? Means the sentence is not given in the serial order. They will be given in a irregular order, and you have to make it in a regular order. यामध्ये 4 वाक्य दिले. इसमें 4 वाक्य दिए रहेंगे. या 2 प्रश्न व 2 उत्तरे असेल. इसमें 2 क्वेश्चन विल बी गिवन and 2 आंसर यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन. या वाक्यांचा क्रम अयोग्य असतो. अयोग्य म्हणजे इस जो वाक्य आपको दिए रहेंगे ना, इसका जो क्रम है वो गलत होगा, गलत पद्धती से दिया होगा, उसको आपको सही करना है. त्याचा योग्य क्रम कोणता ते ठरवून ती वाक्य योग्य क्रमाने लिहा. व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू फाइंड आउट द serial of that particular sentence, like 1 2 3 4, and you have to give the serial number sequentially, and you have to write the conversation as per their proper order. Okay, ऐसे आपको करना है. So here is one example of jumbled order. This is an example of jumbled order. ठीक आहे. आप यहाँ पे सीख पाओगे जंबल ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. तुम्ही इथं शिकू शकाल की जंबल ऑर्डरचे प्रश्न कशा पद्धतीने तुम्ही सोडू शकता. तर पहिले फर्स्ट यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन्स केअरफुली. व्हॉट आर द स्टेटमेंट्स आर गिवन दॅट यू हॅव टू रीड केअरफुली, अँड यू हॅव टू think by your own self that which number will come first and which will come next. That we have to depend on your own mentality. Okay, have you watched today's match? First, Rohit Sharma hits the century. Second sentence, who scored century today? Third sentence, yes I have. So यू हैव टू क्वेश्चन टू आंसर. ओके, हियर इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आंसर रहेंगे, आपको सिलेक्ट करना. तो फर्स्ट आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, हैव यू वॉच द मैच टुडे? यस आई हैव. मतलब ये पहला आंसर क्वेश्चन हो सकता. हैव यू वॉच द मैच टुडे? यस आई हैव. 2 नंबर इसको देंगे. ठीक है, पहले ये उसका आंसर ये हुआ, यस आई हैव. फिर दूसरा क्वेश्चन हुआ, हु स्कोर्ड द सेंचुरी? तीसरा नंबर. तो किसने स्कोर की सेंचुरी? रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी. इस प्रकार से इन दिस वे यू हैव टू अरेंज दिस जंबल ऑर्डर इन अ प्रॉपर ऑर्डर. इस प्रकार से या पद्धतीने तुम्हाला जंबल ऑर्डरला व्यवस्थित क्रमाने लावायचा आहे. आपको क्रम से जंबल ऑर्डर को लगाना है. तो हमने लगाया है. हियर वी हैड अरेंज 1 2 3 4. नाउ यू हैव टू राइट दिस इन योर आंसर शीट. हाउ डू फर्स्ट आपको क्रम देना है, देन आपको उसको लिखना है सही ढंग से. ठीक है, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे हम देखते हैं. So here is the answer. We had already arranged that in a proper order. So here I had write this answer. First answer, have you watched today's match? Second, yes I have. Who scored the century today? Rohit Sharma hit the century. If you write this way, this is the right way to write, and you will easily get 1 mark. Okay, you will easily score 1 mark if you arrange this jumble order in a sequential order like this. इस प्रकार से आप अगर जंबल ऑर्डर को sequential order से करोगे तो आपको easily 1 मार्क मिल जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. Second question is complete the dialogue. You have to complete the dialogue. Whatever the dialogue you had given, that you have to complete. यामध्ये 2 प्रश्न आहेत. In this question you will ask 2 question to solve. त्यांची उत्तरे लिहून डायलॉग पूर्ण करायचा आहे. व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू दे विल आस्क 2 क्वेश्चन अँड यू हॅव टू राईट द करेक्ट आन्सर डायलॉग ऑफ युअर ओन. पाठ्यपुस्तकातील चिटचॅटवर आधारित संवाद यामध्ये दिलेले राहतील. and they will give you the chit chat based on your English textbook, or maybe they can give the questions from the outside of the textbook, also outside of the syllabus as per their choice.
त्यातील एक वर्बल आणि दुसरा WH क्वेश्चन असतो. मीन्स उसमें का एक वर्बल रहेगा, दूसरा WH क्वेश्चन रहेगा. मीन्स वन व्हाट इज मीन बाय वर्बल, हियर यू हैव टू गिव द आंसर विथ यस और नो, दैट इज मीन बाय वर्बल क्वेश्चन. एंड हियर WH क्वेश्चन you have to give the answer in full sentence. So this is the second question. It is also contain of 1 mark, and how we have to solve this question, that we are going to see now. Okay, so see, this is the example of question second B question. Riya, question is, Riya, do you like singing? क्या पूछा गया है कि रिया, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है? आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है. Then again Riya says, who is your favorite singer? Then Priya says, my favorite singer is so and so. In this way you can see here, this is an verbal question and this is an WH question. Okay, this is an verbal question, this is an WH question. Here only you have to say your, like, do you like singing? You can say yes, I like singing. Are you sure? You can say no, I don't like singing. In this way you can write the answer. Who is your favorite singer? You can write Lata Mangeshkar is my favorite singer, or any singer which you like. You can write the name of that particular singer and you can answer this question. Okay, so here is the example of that question. So this is the question they had asked, do you like singing? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो आपण कसं लिहायचं उत्तर? प्रिया सेज yes, I like singing. You can also say no, I don't like singing. In this way also you can write your answer. पर ऐसा लिखो मत. You always give your answer. You show your positive approach while you writing a paper. While you writing a paper, you always try to show the positive approach. You cannot say show the negative approach. हमेशा positive दिखाओ, negative दिखाने की कोशिश मत कीजिए. ठीक है. Second, who is your favorite singer? This question will come. Going to come. How you will answer? Like Priya says आशा भोसले. You can write as per your choice. आप आशा भोसले भी लिख सकते हो, आप लता मंगेशकर भी लिख सकते हो, आप सोनू निगम भी लिख सकते हो. Whatever the singer you like, you can write the singer and you can complete the whole answer. In this way the second question, here also you can score easily 1 mark as per your own mental ability. Okay, the third and the last question, write a dialogue on a given theme. One theme will be given. What is mean by theme? कोणती पण एक तुम्हाला आयडिया दिली राहील, कल्पना दिली राहील. त्या कल्पनेवर एक आपको एक जो भी इमेजिनरी थिंग दी जाएगी उस पर आधारित आपको ये डायलॉग कंप्लीट करना है. इट इज कंटेन ऑफ 3 मार्क्स. इट कंटेन्स ऑफ 3 मार्क्स. यामध्ये एखादा विषय दिलेला असतो, इसमें आपको एखादा सब्जेक्ट दिया रहेगा. त्या विषयावर आधारित 2 व्यक्तीमधील कमीत कमी 3 अर्थपूर्ण संवाद लिहायचा आहे. आपको 2 व्यक्ति में का जो भी संभाषण है वो कम से कम 3 मीनिंगफुल संभाषण आपको लिखना है. व्हाट यू हैव टू डू, दे विल गिव यू 1 सब्जेक्ट एंड व्हाट यू हैव टू डू, द सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन 2 पर्टिकुलर personality, and what you have to do, you have to write 3 meaningful exchanges of both of the personality. Okay, but the exchanges should be meaningful. You cannot write good morning, good afternoon, hi, bye. This is not the way. दिस इज़ नॉट द मीनिंगफुल एक्सचेंज. आप इस प्रकार से मीनिंगफुल एक्सचेंज नहीं है. यू हैव टू को रिलेट विद द टॉपिक. यू हैव टू को रिलेट विद द टॉपिक वाइल राइटिंग द डायलॉग. सो try to stick with the topic. Don't go outside of the topic, outside of the frame. Okay, पाठ्यपुस्तकातील चिटचॅटवर आधारित कोणत्याही धड्याची अथवा कवितेची थीम दिली राहील. तर what they are saying us that the chit-chat is based on any lesson from your syllabus or from the poem. It is not compulsory that, or it is not mandatory also that it will come from the syllabus. It may be come outside of the syllabus also. So don't worry about that. If you are good in English, you can easily write 3 meaningful exchanges. Okay, with proper punctuation mark, with proper contract form, you have to write the dialogue. Okay, so here they had given the example. Question is, write a dialogue between headmaster and a student
who has newly settled in the town and wants to take admission. राइट थ्री मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। मीन्स क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक संभाषण लिखना है जो आपके और आपके प्रिंसिपल, जो भी आपके प्रिंसिपल है उनके बीच में हुआ संभाषण लिखना है, जिसमें लिखना है कि एक स्टूडेंट है जो अभी नया नया उस किसी शहर में मतलब सेटल हुआ है, वहाँ पर आए हुए हैं और उनको उस वहाँ पर आने के बाद उस शहर में एडमिशन चाहिए। तो उसके लिए एडमिशन के लिए वो स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच में तीन आपको संभाषण, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन यू हैव टू राइट बिटवीन द हेडमास्टर एंड स्टूडेंट, बिकॉज द स्टूडेंट वांट टू एडमिशन बिकॉज ही इज़ न्यूली सेटल्ड इन द टाउन एंड ही वांट्स टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल, एंड वाट एवर द एडमिशन प्रोसेस between the student and the headmaster, that you have to write here. Okay, so we will see what type of conversation they are going to write. So here is the example. We had written this conversation. So how you have to write? Students say, here there is no informal way of writing, you have to write the formal way because you are speaking with the principal. So you have to always write a formal type of writing. So you cannot say good morning, how are you. In this way you don't have to write because we are not personally known to the principal. So student says, may I come in, sir? Here you can see the proper punctuation mark is given, the question mark is given. Headmaster says, yes, come in. Here you can say the proper comma is given. That type of writing you have to write. Student says, I want to take admission in your school. What is the purpose of writing this dialogue? That the student is newly settled in the town and he wants admission. So he was asking, I want to take admission in your school. What headmaster says? Headmaster says, in which school where you studying previously. मतलब कहीं पे भी आप जाओगे तो पूछेंगे प्रिंसिपल, आप पहले कहाँ पढ़ते थे, वेयर यू आर वेयर स्टडिंग प्रीवियसली. Student says, I was in Nutan Vidyalaya last year. He is telling that he was studied in Nutan Vidyalaya. वो कहता है कि मैं पिछले साल नूतन विद्यालय में पढ़ता था. हेडमास्टर से, हैव यू ब्रॉट योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. आपको एडमिशन करनी है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में टीसी की काफ़ी आवश्यकता होती है. इस वजह से पूछते हैं, हैव यू ब्रॉट योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. स्टूडेंट से, यस सर, here it is. In this way, here you can see the three conversation between the student and headmaster is meaningful conversation. In this way, type of conversation you have to write by your own when the conversation is going to come in the examination. Hope everybody had understood the question, 5th B question of board exam, and how you have to solve this question. That also you had already understand by this beautiful video. I am now going to give you one example to solve. Try to solve and share it in our WhatsApp group. Okay, so this is the 5th week question. This you have to solve here. This is for your homework, this is for your practice dialogue writing. It is for 5 marks. Question B or 1 or B2, do any one of the following. And I personally tell you that this is an easy question, so every student should prepare dialogue writing because it is very easy for scoring full marks. Okay, so first question here is, prepare a dialogue from the jumble sentence. As we already studied about what is mean by jumble sentence, that you have to write. The question is, A says, do you like to read books? B says, story books. A says, which books do you read? B says, yes, I like. What you have to do now? You have to arrange it. You have to give the proper number and you have to write this in a serial order as I already teach you. Second, complete the following dialogue. So what is your opinion about mobile game? Yes, you are right. These two questions you have to solve by your own. This is also contain 1 mark, friends. And last is the meaningful conversation. So last
question is question number 3, that is a conversation of 3 marks. Here you can see 3 marks. Write a dialogue between a headmaster and a student. We are already seen a conversation between headmaster and student. Who has lost his bicycle, his or her? If girl, he can use her, and if boy, he can use his bicycle from the school campus. राइट 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। मीन्स आपकी जो बाइसिकल हुई वो आपकी स्कूल से चोरी हुई है, उस वजह से आपको प्रिंसिपल से शिकायत करनी है, उसके लिए आपको ये मीनिंगफुल एक्सचेंजेस लिखना आहे। काय करायचं आहे मित्रांनो, तुमची सायकल तुमच्या स्कूल शाळेच्या परिसरातून हरवली आहे, त्याच्याबद्दल तुमचा व तुमच्या मुख्याध्यापकामधील असलेलं संवाद तुम्हाला इथे करायचं आहे, त्याची कंप्लेंट तुम्हाला करायचं आहे। तर इन दिस वे वी हॅड completed the 5th B question based on dialogue writing, and I personally believe that you will definitely solve this question in the board exam, so that you will get full marks. Okay, thank you.